हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। ये एक नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं मैं। इस पॉडकास्ट में मैं लेके आया हूं गौरव भारद्वाज को, जो सिक्योरिटी डोमेन में वर्क कर रहे हैं। उनके साथ मैंने बहुत सारा डिस्कशन किया अराउंड द सिक्योरिटी डोमेन में कौन कौन से रोल होते हैं, क्या करियर अपॉर्चुनिटी होती है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है। और साथ ही साथ मैंने बहुत सारी चीजें उनसे निकलवाने की कोशिश करी अराउंड द हायरिंग प्रोसेस, सर्टिफिकेशन, रोड मैप। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो वेलकम गौरव सर मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए, और थैंक यू सो मच। आपसे मैं वीआईटी भोपाल में मिला था, उसके बाद जो आपकी जर्नी रही मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सो आई वॉज एक्साइटेड कि इनको मैं पॉडकास्ट पे लेके आऊँ, थोड़ा बहुत कॉन्वर्जेसन करें और आपके लिए बहुत हेल्पफुल कंटेंट लेके आए। तो गौरव सर, सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो। Sure. First of all, thank you, Paras, for having me here. I cannot, express my gratitude enough having spending time. My name is Gaurav Bhardwaj. I am the engineering manager in cybersecurity for John Deere. थैंक यू सर बताने के लिए। एक चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी इसमें कि सिक्योरिटी इंजीनियरिंग मैनेजर। ट्रेडिशनली लोग प्रोग्राम मैनेजमेंट या प्रोडक्ट मैनेजमेंट इस रोल्स में जाते हैं, तो ये पर्टिकुलर रोल कैसा है, और स्पेशली जो यंग पीपल देख रहे हैं उनको अगर इस रोल के बारे में जानना है, आपने कैसे इसको अप्रोच किया ओवर द आपके करियर में, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताओ। So basically, in very layman terms, if I try to explain what I do, is like I need to lead the vision for my team, which is keeping zero breaches or defending my company against any cyber crime. This is what is my vision, is what I aim for every day. Now there are many individual things I do. It might be around seeing company, my employer as a whole, and then uh, trying to assess what are things are not secure, how can we make them more secure, and then taking those visions inside my team and then asking them how can we do that, what are the things we need to protect this particular piece for the company. It might be our infrastructure, like your laptop, like your servers, maybe your virtual machines that you create in cloud, right? The servers you create in cloud. It might be a on-prem system where your data centers are, and it could be even the equipment that are getting used inside the tractor, right? The embedded piece. It could be the emails that every employer use, every person on here use, how they report things. It could be any security fault in the system. So all these things we do, but ultimate aim for a security engineering manager depends on his line of function, is to keep the breaches zero. दैट्स नाइस। और काफ़ी सारी चीज़ें आ गई इसमें, बट ट्राई करते हैं इसको मैं जितना ब्रेक डाउन कर सकूँ आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की ट्राई करूँगा। सर जितने इन्होंने टर्म अभी बताया उसी टर्म को बिल्कुल ब्रेक डाउन कर देंगे और आपके लिए सिंपल लैंग्वेज। सर एक चीज़ और बताओ मुझे कि जनरली क्या होता है कि हम कॉलेज में जो हमारे स्टूडेंट्स जो वीडियोज़ देखते हैं उनके पास मोस्टली ट्रेडिशनल रोल्स होते हैं, एसटी बन जाओ या वेब डेवलपमेंट कर लो, और स्पेसिफिकली सिक्योरिटी में बहुत कम इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं भी क्लाउड से हूँ तो मुझे पता है क्लाउड में भी सिक्योरिटी एक पर्टिकुलर रोल है। आप कोई जो यंग स्टूडेंट अभी देख रहा है उसको कैसे आप एज ए ओवरव्यू देना चाहते हो रोड मैप का, लाइक इफ एनीवन वांट्स टू अप्रोच दिस रोल आप, और इसका क्या ग्रोथ पोटेंशियल है आने वाले टाइम में, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज आजकल एआई आने से देयर आर लॉट ऑफ टॉक्स अराउंड कि ये रोल चला जाएगा वो रोल चला जाएगा। व्हाट अबाउट द सिक्योरिटी में क्या पोटेंशियल है वो भी थोड़ा सा डिस्क्राइब। So many questions in these last three sentences, but if you really ask me that, for folks who are watching or maybe a fresher trying to start a career in cybersecurity, my first line would be that security is not always about hacking stuff or breaking stuff or finding the loopholes in the system. That is just one piece of it. It gets most attention, I know, because it's cool. You can be on your own. Companies pay a lot.
for folks who does that. But you need to understand there's a lot that goes behind it. So if there are so many people attacking and all the companies are at risk, that means you need to have people who are continuously defending their corporates or their company to save from those loopholes. I'm going to use a layman language loopholes. There are many terms in the cybersecurity area to define loopholes, but this is where I particularly feel that the way I meet students and all, they all talk about hacking, offensive security, and I'm not saying that that's a bad piece. It's just that also think about the defense piece. Right? If you're attacking the one who has to defend, how is he going to and how is she going to, fix that? Having said that, I would say for a person who's new, the traditional roles have always been coding, DSA karo, algo karo, and then just go in a company and be one small piece of a big huge software where for first 3-4 years of your life you're just trying to just be that brick in the wall. Also try to come out of that wall and see that there are many other interesting pieces. I'm not just saying cybersecurity, ERPs, cloud engineering, DevOps, DevSecOps. There are tons of things. Try to look up. I know the markets sometimes does not play in your favor, but if you have your craft, if you are good at something, please try to follow that lane too. If I go ever tangential from what I should be talking about, please stop me. For someone who is starting new, what do you really need in yourself to start as a security guy is that you need to be a good generalist. When I say generalist, what I really want to say is computer science is beautiful. Computer science is amazing. For some it might be boring, for me it's not. For your 4 years in your bachelor's, even if you remove in first year and all the mastis, and I don't want to go into detail, but whatever you want to have fun, that is okay, right? 3 years are way more than enough for you to learn computer science. And there are tons and tons of helpful things on the internet, YouTube, videos, documents, PDFs, research. But even if you don't want to do that, think or learn basic things like operating systems. What does it do? How does it work? What are processes? What are threads? Learn about the nitty-gritties of computer science. एक मेमोरी के रीड ऑपरेशन में कितना टाइम लगता है, एक हार्ड डिस्क में डेटा रीड करने में कैसे टाइम लगता है. These core concepts will never ever leave you in your entire software engineering career. Wherever you go, cloud, DevOps, coding, they will always haunt you. If you don't know them, you will always feel that someone else is better than you. Then networking is like another biggest or the strongest core of cybersecurity. How does a data packet from this laptop or that computer goes to somewhere else over the internet across the seas, right? Learn about these things, like what is DNS, IP address क्या है, resolve कैसे होता है, data वापस कैसे आता है, scaling कैसे होती है, encryption, a huge piece if you want to come in cybersecurity. Learn SSH, SSL, TLS, protocols. At a fresher's level, at a someone who's starting new, no one will go and ask you to develop your crypto algorithm, but they would expect you to understand what are these things. What does cryptography mean? How do we share that data which coming from me going to you? How can a third person receive to read that? And or they can read, but how much time would it take them to decrypt that whole thing? So networking, operating systems. Third piece is databases. Okay. Database is another most important piece in cybersecurity, and there are many technologies that revolve around databases. SQL, data store करना, fetch करना, query करना, right? तो databases के साथ बहुत सारी चीजें आती हैं. Databases. Why is database important? Why is SQL important? Why is NoSQL data? Because you need to go to that particular row or that important piece of information which is telling you something that happened 6 months ago.
you need to be able to have those semantics or understanding of the semantics of structured query language. So mostly sir wants to say कि इतना सारा मत देखो चारों तरफ, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट करो एंड यू कैन गो टू नेटवर्किंग पार्ट. नेटवर्किंग में जो जो टर्म्स इन्होंने बताए वो सारी चीज देखो, एक्सप्लोर करो. क्यूरियोसिटी होनी चाहिए अंदर कि लेट्स सपोज इफ आई एम फाइंडिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक टुडे, तो उसको कैसे रिसर्च करना है, देन उसके अराउंड, देन डेटाबेसिस अपार्ट फ्रॉम. और इसके साथ कोई ऐसा फॉर्मल प्रोसेस है, आप एज्यूम करते हैं कोई देखने वाला स्टूडेंट है और वो 4th ईयर में है, अब उसको उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, देन ही वांट्स टू डू सिक्योरिटी इंजीनियर, तो उसको क्या कंपोनेंट्स इसके अलावा चाहिए? लाइक यू सेड एवरीथिंग कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर लो, नेटवर्किंग कर लो, देन डेटाबेस कर लो. अपार्ट फ्रॉम दैट, डू यू सजेस्ट एनी सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेशन जिससे उसका वैल्यू एडिशन होगा during the interview process, and what sort of skill set you look into the candidate? What do I look for? I've been interviewing candidates specifically around security this last 6 months, specifically on the folks who are not experienced coming in the fire. I'm going to ask you very basics around operating systems. क्या होता है IP? क्या होता है सबनेट? एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कैसे कनेक्ट होता है? इंटरनेट कैसे चलता है? डोमेन नेम सर्विस क्या होती है? एक डेफिनेशन काफ़ी नहीं है. You need to go inside, understand, and specifically why of everything. Then your data structures का basic, okay, which is an expensive operation for me. You should have an understanding of why linked list. What is an expensive operation in linked list? Why am I going to hashes, hash map, whatever you say, Python dictionary. क्या फायदा है हैशेस का, क्या फायदा है अरेज का, ट्रीज कहाँ यूज करते हैं, डेटाबेस में इंडेक्सेस कैसे बनते हैं. दीज आर द मेन थिंग्स देन व्हिच आई गॉज यू एट फर्स्ट. अगर आपको इतना आता है, दिस इज योर 70% ऑफ इंटरव्यू क्रैक्ड. Okay. Now comes the next part where I will ask you more specific questions around security कि HTTP, HTTPS से क्यों मूव हुआ, कौन से प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, TLS, SSL, HTTPS, HTTP में क्या डिफरेंस है, APIs क्या होती है, ज़रूरत क्या है APIs की, REST API हुआ, SOAP हुआ, तो क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या ज़रूरत पड़ा, HTTP 200 का मतलब क्या है, HTTP 201 का मतलब क्या है, 400 का मतलब क्या है, और मतलब से I'll backtrace कि आपका नॉलेज कितना इन डेप्थ, राइट? Okay. तो बेसिक्स ऑफ सर्वर्स, वेब सर्वर क्या है, एप्लीकेशन ये कैसे कनेक्ट होते हैं. 70 to 90% इज ओनली गोइंग टू बी जेनरिक्स ऑफ कंप्यूटर्स. अगर आपको उतना आता है, यू आर गुड फॉर मी. इसके ऊपर सिक्योरिटी 10 से 20% सिक्योरिटी. कौन से जनरल आपने देखे हैं सिक्योरिटी लूप होल्स क्या होते हैं, डीडोस क्या होता है, MITM अटैक्स क्या होते हैं, SSL के बेसिक्स, DNS स्पूफिंग क्या होती है, सिंसेनैक एल्गोरिथम क्या होती है, TCP UDP में क्या बेटर होता है, कैसे होता है. I'm probably revealing too much around my interview. Yeah, it's just a general thing. They're just giving out data कि जाओ देख लो, सब नोट करो और प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लो. So mostly इसमें और भी कुछ ऐड करते हैं आप. Like let's suppose there is a candidate with the certification with the knowledge and there is a candidate with knowledge but without a certification. तो उसमें आपको लगता है कि सर्टिफिकेशन वाले को प्रेफरेंस मिलती है? अगर मिलती है तो what sort of certification you want to suggest to my audience कि ये करना चाहिए? I will not talk much about certifications, promoting one over other. At the level of freshers, I think there is a cost to get those certification. There is a difficulty that's gonna come in those certification. But still, even after you clear those, I'm going to still ask you questions about the generics. So मैं सर से वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. So you go check out in the description section कि उसका क्या रोड मैप है और कौन सा सर्टिफिकेशन किस पर्टिकुलर रोल के साथ अच्छा अलाइन करेगा. सर उससे पहले एक और क्वेश्चन होता है कि लाइक जैसे मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था इनिशियली, सो आई हैड दिस थॉट कि यार इतना पैकेज मिलेगा तो ये करेंगे, इतना पैकेज मिलेगा तो ये. सो इवन इन केस ऑफ सिक्योरिटी, लेट्स सपोज यू हैव इंटरेस्ट बट स्टिल यू लुक फॉर दैट नंबर कि यार क्या पैकेज होता है. सो आप अगर कुछ अपना लो
पैकेज इनिशियली फ्रेशर को कितना मिल जाता है एंड हाईएस्ट पैकेज कितना मिल सकता है इंडिया में, जस्ट फॉर मोटिवेशन कि उसको लगे कि यार चलो इसको ट्राई करते हैं. Salary numbers are always hard to give. I would, try to stay away from that conversation, but still there is some information I can give. You are coming out of, a good college, showing a good knowledge, and you cleared the exam. I think anywhere around to 12 and 12 plus is easy. Okay, that's for fresher. So the days to you start having 6 months of experience or a year of experience, 12 plus is not. ओके बहुत अच्छा नंबर है इफ यू वांट टू ट्राई इट आउट. अगर आपको लगता है कि स्पेसिफिक पैकेज इन्फॉर्मेशन चाहिए स्पेसिफिक कंपनी वाइज, तो मैंने पहले वीडियो में बताया ग्लास डोर को जाके एक्सप्लोर करो. ग्लास डोर पे सिर्फ आपको रोल डालना है और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. सो बहुत अच्छा पैकेज है इनिशियली एज फॉर फ्रेशर. आई नो कि एसडी को भी इतना मिलता है इनिशियली, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट एक पर्टिकुलर जितना मेरे को सर के साथ कॉन्वर्जेशन करने के बाद पता चला है कि एक्सप्लोर करने वाला डोमेन है. सो सर इसमें पर्टिकुलर कुछ रोल्स आप बता सकते हो कि लेट्स सपोज कोई इंजीनियर बन रहा है तो उसको क्या डेजिग्नेशन रोल्स मिलते हैं और कितने तरह के रोल्स होते हैं इसमें ओवरऑल? For sure, cybersecurity is very huge. There are tons of things, tons of terminology. Fortunately or unfortunately, there are many jargons in cybersecurity, but they ultimately drill down to one of the very basics. I will list out few to just give you, very quick 10,000 feet overview of what we really do. I'll start with SOC analyst, SOC, Security Operations Center. Okay. So Security Operations Center is like your war room setup. So if you might have seen movies like Wednesday where Bunk has an earplug in his ear and then he's looking at 10 different screens. Folks are sitting to defend, or maybe like when you launch a satellite in his store, right? That the whole setup is called war room. So as a SOC analyst, you generally get to sit in those fancy rooms, look at the overall security perimeter, the posture of security posture of that corporate, of that particular place. So you will be analyzing those situations, those problems, those loopholes, right? And there are many tools in place, there are processes in place, how you attempt this particular kind of. So that is SOC analyst. Okay. Then there are different other, operations center. There is something like network operations center. So network में कोई problem आया, कोई firewall down है, cloud की firewall. There are many other things, DNS, network, wireless, बहुत सारी चीजें हैं. But SOC, then NOC, then something for freshers is phishing operations, which is very easy. Phishing operations is like how do you, enhance or how do you keep a control of social engineering, because social engineering is where people get scammed, fooled, might ask you to download some malicious file, and ransomware, everyone knows, right? You download a file that gets executed, every data is encrypted, and then they'll ask you for money. For all these major attacks, phishing a person or social engineering a person is easiest, quickest, the cheapest way to get into the system, get your foot in the door, and then you can eventually do so many. Phishing operations, SOC, NOC. There are some more tricky roles. Platform engineering. Platform engineering revolves around how do you create those tools which your SOC analyst, SOC analyst can use to defend or save your corporate. It means you might have to ingest logs of different systems into one common place. Splunk is one place, your SIM tool. You might have to come up with many data pipelines where you can stream data from one source, put in something sort of data engineering, endpoint security. So company के जितने भी assets होते हैं, knowledge worker जो हमारे लैपटॉप या सर्वर्स या वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल अपने क्लाउड में जो सर्वर्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को आप सिक्योर कैसे करते हैं? इट्स समथिंग लाइक अ फैंसी एंटीवायरस.
but it gives you tons of laws, it gives you many extended capability. Then there are always in big corporate security awareness thing, which is very easy to crack into, where you have to go and work around communication की मैं अपने कंपनी में लोगों को एजुकेट कैसे करूँ. अगर वो कोई सिक्योरिटी का फ्लॉ देख रहे हैं तो कैसे वो रिपोर्ट करते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग्स बनाऊँ, वीडियोस बनाऊँ, ईमेल कम्युनिकेशन लिखूँ. तो एक अवेयरनेस टीम्स भी जनरली होती हैं कॉर्पोरेट्स के अंदर. Okay. That is there. Then a very fancy or new term that's coming around is cloud security. तो AWS के अंदर कैसे सिक्योरिटी आप स्पेसिफिकली डालोगे. AWS की चीज़ सबके अपने अपने सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स भी हैं, तो उनको कैसे यूज़ करना है. सो क्लाउड सिक्योरिटी में आपकी वर्चुअल मशीन्स आ जाते हैं, क्लाउड सर्विसेज आ जाती हैं. अनदर biggest thing is container security. Yeah. Kubernetes and tons of technologies around there, right? तो वो प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग का पीस है. कैसे डेटा एक जगह लेके आना है, क्लाउड का डेटा कैसे एक जगह लाना है, उसके अंदर कहीं कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन है तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है. All these things are around cloud security, right? Then one of the most popular and I don't know if you're gonna have to tell them is about security researching. This is one of the very fancy things and everyone is chasing that. In my little opinion, that एक major another major जो line है, that is vulnerability scanning, VMPAT, vulnerability assessment kind of. Like जो भी आप applications develop करते हो, right? Coders can relate to it. Whatever you code in a website and it is a public thing. Yeah. If it is end user thing, it has to pass that. Otherwise, you cannot be public, you cannot be globally available, you cannot be searchable on the internet. So finding loopholes, scanning, and then going back to the teams, developer teams, and saying you need to fix this, because if you don't, then companies brand information or this brand value is going to end. I can give you many examples where company having huge wealth and everything, and one hack and their brand value is down in the flash. सर अपार्ट फ्रॉम जो आपने टेक्निकल स्किल्स बताई और जो भी आपने रोल्स बताए, क्या एक ऐसी चीज है जो और रिक्वायर होती है एक इंजीनियर को एक अच्छा इंजीनियर बनने में, एवरेज इंजीनियर से बहुत अच्छा इंजीनियर बनने में, तो वो कुछ आप हाईलाइट शेयर करना चाहोगे? For sure, this is a very good question, because technical skills only help you up till certain point in time. With AI and all, a lot of technical things goes away, and then it's a human intelligence that sits over on top of all these things. So, first thing is communication. Very easy to do when it's in your mother tongue, but it's very different when you're talking in a professional setting. How do you say the right things? How do you set the right tone? How to say it politely? How do you communicate what you are doing? That is the most important piece. If you don't know how to communicate, you cannot tell everyone else in your team, in your company, you cannot prove your worth. Right. Communication, very, very important. Second thing is showing the right attitude. I don't know, most of the time ऐसा होता है कि आपने कुछ ABC पढ़ा हो बट आप काम XYZ भी नहीं होता है. बहुत technologies change, frameworks change, tools change very, very, very rapidly these days. Yeah. How do you learn new things and how you unlearn the same new things to learn something new? Yeah. How do you adapt? Right? How do you adapt and then quickly get these things and then do things smartly, show the first piece of value कि हाँ अगर हमने ये किया तो हम इससे यहाँ पहुँच जाएंगे. Communicate that value to our upper leadership. You will rise quickly in your career. So communication, kind of presentation, having the right attitude, and then just doing basic things right, like basic decency, right? Helping someone in your team,
adding value in his life. Follow-ups is something which is the worst part. If you are my boss and if you have to follow up even second time on something I've asked you to do, it's not looking good. You need to communicate with your teams, with your bosses, with your leaders that yes, I'm working on this. This is the obstacle. Tomorrow I'll try to do this, and maybe the next day I'll try to get this. Right? And then communicating these things is one of the another soft skill that take you, elevate you in your career. Nice. These are the things I remind as of now I can think of, but I think communication, right attitude, basic things, basic attitudes is Really important if you want to grow in your career. And with that, थैंक यू सो मच गौरव सर. Thank you so much. तो इस पॉडकास्ट में बहुत सारी डिटेल शेयर करी हमने. आई होप कि आप लोग जाके देखो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो सिर्फ अभी एसडी रोल या स्पेसिफिक एक दो रोल में जाके स्टक है. तो पूरा पर्सपेक्टिव मिलेगा हाउ सिक्योरिटी वर्क्स इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या लेयर्स हैं उसके. एंड थैंक यू सो मच इतना इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए. और अगर आप चाहते हो कि गौरव सर से और ज़्यादा सीखना और इन्फॉर्मेशन अराउंड सिक्योरिटी और कहाँ कहाँ ये कॉन्फ्रेंस करते हैं, लाइक मैंने देखा मैं भी इनसे एक इवेंट में मिला था. सो उसकी भी इंफॉर्मेशन ये अपने लिंक्डइन अकाउंट पे शेयर करते रहते हैं. सो यू कैन चेक आउट लिंक इन डिस्क्रिप्शन और मैं स्क्रीन पे भी लगा देता हूँ, तो वहाँ से भी जाके इनको फॉलो कर लो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन. और लास्ट में अगर आप गौरव सर कुछ ऐड करना चाहें फॉर माय व्यूअर्स. First of all, thank you so much for having me here once again. I don't know, I never done these. Hopefully, folks like, and if you don't like, do whatever you want to do. Please reach out to me. I generally, we try to be very active on LinkedIn, and one of the things that inspires me the most is to inspire someone else and then give those things that challenge me for a long time and help them with those things. Please reach out to me on LinkedIn. I think that's the easiest way. I will probably be seeing your messages. I keep doing a lot of hirings. Abhi bhi I'm looking for some internship opportunities for 3-6 months. Please reach out if you have a thing for cybersecurity. कॉन्फ्रेंसेस, नलकॉन, बिसाइड्स, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं. आई थिंक अगेन आई कीप शेयरिंग दोज थिंग्स ऑन लिंक्डइन. I'll definitely be happy to help. Thank you so much.